how they ask questions. Why is the sky blue? Why is the bird flying? But as some reason when we get older, the curiosity goes down. And we think हमारे पास जो knowledge है, हमारे पास जो सोच है, हम perfect हैं. पर ऐसा नहीं है. We have to be a lifelong student. Because people think, we have knowledge, atrophy. So please be a lifelong student. Don't lose that curiosity. Please, that's the most important thing I tell wherever I go to the youth. Please be a lifelong student. Whatever you do, throw yourself into it. Your head, heart, and hands. I don't look at my job as a job, but as a calling, a passion. I don't care about how many hours I put in. My work is my joy. So whatever you do as a calling, do as a passion, not as a job, not as something temporary. आप हर चीज को temporary करके हम दूसरे पे change करते. Be focused, work hard. I'm sure you will get it. Third and the most important, please help other people rise. Greatness doesn't come from position, but helping build the future. All of us in a position of power have an obligation to pull people up. We have an obligation. If we rise, and if we cannot pull people, if we cannot rise people, हम हमारे से छोटों की अगर मदद नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता हम कुछ कर पाएंगे. ये हमारी सबकी जिम्मेदारी. आप भी आपसे छोटे हैं, तो उनकी मदद करें. I think that's the most important thing in life which people forget when they keep rising in life. And the fourth and most, I think for me it's most important, please stay fit. Please work hard. Please please do yoga. Please filter your food. Whatever food you are eating, आपके सामने जब प्लेट में खाना आता है, लोग आपका शरीर कोई garbage नहीं है. It's not a garbage. You put in whatever anybody is serving. Please see what you are eating. I read somewhere, I think in Bhagavad Gita also, वहाँ पे लिखा था कि ये Almighty God ने हमें ये शरीर दिया है. अगर हम इस शरीर की देखभाल नहीं कर सकते, तो हम किसी भी चीज की देखभाल नहीं कर पाते. So the most important thing is to look after yourself. Look into you. Everything is inside. Please don't look outside. The fifth most important, I think, please work hard. Do not let things halfway. There's a little poem, and I think I enjoy that poem. And all my life I've read about this, and this really inspires me. कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, 100 बार फिसलती है, 100 बार वापस जाती है. मगर विश्वास रगों में साहस भरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं. डुबकियां में सिंधु गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है. मिट्टी सहज मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. अंतिम पद है, असफलता एक चुनौती है. असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो. असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो. जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम. जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. इस एहसास से I think the youth should have so much confidence in themselves. Nothing is impossible. आप बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े लोग जो भी आप देखते हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत संघर्ष किया है. हमें हर चीज इजीली चाहिए. I don't think so it's going to happen. So it's been a wonderful thing. I would want you to all ask questions. Jai Hind, Jai Bharat.
Please ask any questions you want about the foundation, about our projects. Be in touch with us. It will be wonderful to be part of all of you. Thank you so much. I hand over to Jayashree ma'am. Thank you so much, ma'am, for your inspirational words. Our next speaker